सिंधु देश का जो केस है, वो आज का नहीं है। सिंध की हिस्ट्री 7,000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल जो हमें रिटन हिस्ट्री मिल रही है, वो 3000 ईयर्स की मिल रही है। तो हमारा सिंधु देश का जो एग्ज़िस्टेंस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो रूट्स हैं, वो शुरू दिन से हैं। लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन, इस्लामी नेशन, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि भई जो हमारी लैंड थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारा जो कल्चर था, हमारी रूट्स थी, हम किसी को भी ये हक नहीं देंगे कि वो हमारी लैंड, हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारे रूट्स को डिस्ट्रॉय करे। Namaskar everyone and welcome. Thank you, Team Sangam Talks, for providing this platform and network to bring the case of Sindh. Of course, Razak Baloch Sahab, he will talk about the Balochistan and how the occupation of Balochistan was happened in after creation of Pakistan. I will focus on the case of Sindhu Desh and how the Sindhi nation, historical Sindhi nation, is persecuted and exploited in name of federal government or central government, which is just like a aristocratic society governed and ruled by a class or elite class. They are continuously denying about our freedom, which is our self, oneself birthright, natural birthright. Aparna ji, as you already put it forward, the case of Sindh by telling that Pakistan is a unnatural country, an unnatural state, which was created in the name of religion. So I will try to continue from that point only. Pakistan was not a country. Never ever anybody has listened the name of Pakistan before 1947. Even if we look at resolution of 1940, which is called Lahore Declaration, after that they renamed it Pakistan Resolution. There was no name of Pakistan in it. Resolution of 1940, it says that all provinces or states which will join on the name of Islamic we are going to create a Islamic state, and all states will be with their separate sovereignty and independence. But it was not acceptable to British because British wanted to destroy India. They wanted to create different blocks in our region. It's just like geopolitics game they played because they was knowing that if India is going to remain as it was before, it is going to be a superpower of the future. In that time, socialism was coming from Russia. So to blockage that, socialism, British played that role and they used Jannah. I'm not saying only that Jannah was used, but few uh, leaders from India also were used in this process. Nation means you must be having your culture. You must be having your identity. You must be having your history, your tradition, your name. But if we call it Pakistani nation or Islamic state,
It is just a simple thing to understand for any person who has common sense that there are no nations in the world on the name of religion. And you cannot create a sudden identity, a nation. Of course, there was nations in this region, Sindhi, Baloch, Pashtun, Punjabi, but there was no Pakistani nation. Pakistan's problem starts from that identity crisis. First, they denied to Bangladesh, to Bengali people, that no, you are not Bengali anymore. Your Bangla language will be omitted. You are Pakistani. Who the hell has given right to these radicals that you destroy any historical nation's identity? No, nobody has right. If I am Zafar Sato, I am Sindhi, and my history belonged to 5,000 years ago, 7,000 years ago. I am in Rigvedas. I am in Indus Valley civilization. I am from Indus culture. Within 70 years, you are creating a country and giving it name the Pakistan, and you are trying to steal my identity. No, I will not allow you. This is my right to keep my identity, to keep my land, to keep my history, to keep my traditions. You don't have any right. So that's why I call Pakistan a unnatural, fake, created state. But now it is proved that it is not anymore a state. It is become, when ISI was created in 1948, British agent created it, ISI, Pakistani Intelligence Service. From that day, it became a terrorist organization. There is no state, there is no Pakistan, there is no country, there is no Pakistani nation, but it is a terrorist organization. How it is terrorist organization? Because if you look in the history, every time they have invaded, they have attacked, they have killed, they have destroyed, and this this is in their gene, because of their radicalism ideology. It is in their gene. It is in the now in their DNA. Attack on Jerusalem, attack on Kabatullah. This radical Islamist ideology I am talking about. Attack and hate with Christians, with Hindus, with infidels, because it is written in our holy book. They'd kill everyone until any person, any human on the earth will not become Muslim. Who has given you right? From where these things you have bring? As Pakistan was created, they attacked 1947. Within 2 years of creation of Pakistan, they attacked Kashmir. Thousands of people was massacred. Women, kids, everyone suffered. 1948, they attacked Balochistan, occupied Balochistan, killed hundreds of people over there. 1971, they attacked Bangladesh, genocide, and nobody is there to ask them.
till now, our our movement of GS and freedom movement, or our national movement for freedom of Sindhu Desh, started 1972. Actually, it was started before, when I remember that in 1956, when the language and central government one unit was started, that time only these protest was started, that the commitment in 1940 resolution was different, and now the things are different. So not only in Bangladesh, but Balochistan, in Sindh, in Pakhtuns, they already started that. It was said in Lahore Declaration that all states will be free and so on, but nothing is what was the promise. It is nothing there now. Just one elite class, or you can say ISI wing, terrorist organization, that is controlling Pakistan. So 1972 Sindhu Desh movement started because our leader Sai GM said realized that Bangladeshi people, they contributed in Pakistan's economy 75%. They did everything, but Pakistan always discriminated with them. West Pakistan, I am saying, means Islamabad, Pindi, and Punjab. And when Sheikh Mujibur Rahman won the election with high margin, but still they refused him to give the power and to control. So after that, Sindhi people realized that this Pakistan, which was created on two nation theory, that we are Muslim nation, it is totally destroyed. It came already false that Bangladesh got independence or freedom from Pakistan. Now, Sindhu Desh, Baloch, Pashtun, they are asking for their right to self-determination, and which is our right, which is our natural right. Nobody can deny from us, even UNO, even world civilized countries, they cannot deny us. Nobody can deny us, because it's our right. We want to keep our identity. We don't want to be labeled as, now Pakistan, it is morally declared that Pakistan is a terrorist country or a terrorist organization. They are promoting state sponsored terrorism, not only in India, but the recent situation in Afghanistan. If we are looking at Afghanistan, Pakistani journals from day first, they are sitting in Kabul, they are sitting in Panjshir, and they thrown a legitimate elected government, and now they have produced over there their own culprits, these same ISIS, Jaish, in different versions of their jihadis. What happened to India? If you continue from 1947, India was attacked at first in Jammu Kashmir. Then you can see 1965 war, you can see Kargil war, you can see 71 war, you can see the Bombay attacks, you can see the Pathan Kot attacks. So not only these are the neighboring countries, but Pakistani sponsored terrorism has reached till America, till Europe. A mob, ISI supported mob, is coming out in France, it is coming out in Yunnan,
It is coming out in USA, UK, everywhere. You can find these culprits now. We are they are saying that we are fighting infidels. Who has given the right to you to kill and execute or murder people who don't want to believe in your religious ideology? That's why we Sindhi want to keep our historical identity, which was based on Sanatana Dharam. We were first civilized nation who gave world the ways of living, science, technology. But now, in the name of Pakistan and Islamic country, they want to make us same like them, the radical, which we don't want to. It is our right. We are a civilized nation. We want to keep our secular, progressive, nationalistic uh, thoughts and identity. Now, Pakistan has started promoting madrasas in Sindh. There are approximately 50,000 madrasas in Sindh. In each city, in each village, they are bringing these radicals from different parts of world, and they are trying to convert our DNA. They are trying to convert our identity of Sindhi people is same like them. See, it is not that I have problem with Punjabi people. No, I am not racist. I don't have any problem. But what they are using that ideology, that is wrong. Denying from your roots, that is wrong. Denying from your history, that is wrong. They don't even speak their Punjabi language in the home. Why? You have to. You have to teach. They feel shame. Urdu language. Urdu language is nothing. Urdu language, it is called a language of invaders. Lashkari. Its meaning is Lashkari. You have your own Harappa civilization, Sindhu, Mohenjo-daro civilization. You have your own characters of your history. Why you are running behind sometime to Ghaznavi Turks, sometime to Spanish, sometime to Greek, sometime to Arab world? Come on, use your common sense, which is Sanatana Dharam, which is Sindhuism, which is Hinduism. This namaskar, I say, this namaskar, this is from our history, this is from our culture. This is not something from, we have not bring from some place. This is our history. Why these people are continuously trying to deny from their identity? In the ideology, Islamist ideology, you have to hate Hindus, you have to hate Christians, you have to hate Sikh, any person which don't believe in Islam, he must be persecuted, he must be killed, he has no right to live. Population of Sindhi Hindus at the time of partition, it was 26%. Now it is 1.3% in Sindh. They were forced. A lot of them were killed in the name of religion. This crime was committed by British. This crime was committed by Jinnah. This crime
was created from some Indian leaders also. They supported Pakistan, creation of Pakistan, which was a blunder of the history. And all who supported in creation of Pakistan, they must be bring to the justice. First thing, for genocide in Bangladesh, they must be punished. Genocide in Balochistan, they must be punished. Killing and genocide in Sindh and genocide of Pashtuns, these all organizations which is called Pakistan Organization of ISI, they must be bring to the international courts for their crimes. Not only Sindhi, Baloch, Pashtun, Kashmiri people, for whole world. If you look 9/11, who was behind it? Osama bin Laden. And where he was? He was in Pindi. Means 3,000 people which was killed in 9/11. The crime comes to Pakistan, to these ISI culprits, to these radical Islamists. A lot of people say that Israel's issue or issue with America or instability in the region, it is Iran and ISIS and Daesh. But believe me, the main core issue is Pakistan. Pakistan is responsible for everything. ISI is responsible for everything. They have sponsored, they have sheltered. Still now, Hafiz Saeed, where he is? Masood Azhar, where he is? They are harboring in Pakistan. They are enjoying the perks of journals in Pindi and Islamabad. Why world is shut? Why people, sensible people, the people having common sense, why they are not understanding these things? How many these madrasas they are making now in Sindh and in Pakistan, and these small kids they are producing. If I always say that if 18 people come to Mumbai and destroy Mumbai for 10, 15 days, people were disturbed, India were disturbed, or Osama bin Laden, one person can destroy whole world. So maybe after 5 years, 10 years, if these 50,000 jihadis will come to India, neighboring countries, what do you think? In Ghazwa Hind, what is Ghazwa Hind? It is this Ghazwa Hind. They are creating these madrasas and producing thousands of Taliban. These are small kids. They can be used anytime. They can be used against India. When Kabul was invaded, they won the war in Kabul. They already announced that we did it. Now the next target is Delhi. What is means of Delhi? Means Ghazwa Hind. Really? And Pakistani journals, Pakistani ministers, they gave these statements. The day is not far away that Islam will rule whole world.
Who has given right to you say these things? Nobody has given you. Okay, more than that, they say that, okay, we are saviors of Islam. The same issue with Muslim people happening in China, but nobody, these ISI culpers, jihadis, these Talibans, radicals, they are not even speaking a word for them because China is their father now. China is their father now. They don't want to talk against China. But if anything happens in India to Muslims, they say, oh, see, the Hindus are killing Muslims. If anything happening in Europe, in France, how much France has got the trouble because of these radicals? They say, oh, see, Christians are persecuting Muslims. Why you are not talking about Muslims? Because China is giving the money to you. I have really concerns now about Sindh, especially about our coastal area, Karachi, and our sea, because we Sindhi and the land of Sindh is contributing 75%. Natural resources 65%. We Sindhi are generating the revenue of for Pakistan. 95% port import export is done through Sindh. Pakistan has lended a lot of money from China, and we are now afraid that these Punjabis have looted Sindh till now. They have did everything against us, but we are afraid now that they, to cover their debits, they are planning to sell Sindh or lease Sindh to China. And they have done few things. It will be not only the bad thing for us or a disaster for us, because we will go in permanent slavery, but this is going to be a problem for India also. Not only for India, but whole world, because this Indian Ocean, once Chinese will reach there, or once the China will occupy this whole region, the hot waters, because Sindh is called the gateway to South Asia. So from Karachi, I think it's 30 mile. You can see the Mumbai, you can see the waters of cities of India. So if China will already, Chinese are there in hundreds of thousand number, they are in the sea already. But once they will fully occupy and operate this region, it is, we are already dying. Our culture is dying, our history is destroyed, but it is going to be problem for India, not only from the sea, from hot waters, from the seaside, from the port, but on the borders. They have given target to Hafiz Saeed, and they are producing thousands of thousands Talibans over there. They have the training camps, they have everything over there, and we Sindhi people are not even allowed to go on that west, our east border, means the border with India, in Rajasthan and that deserted area. Believe me, we are not allowed to enter in these areas, because they have going on lot of operations over there with China together. The time has come, if we will not take measures, if we will not come with strong, active strategy, awareness, this region is going to become a disaster.
not only us, but this whole region is going to be destroyed. And that same threat is every time given from these culprits, from these ISI sponsored proxies and these maniacs, that we have nuclear weapons and we can use it anytime against not only India but against whole world. Now, how we can counter this blackmailing? Even USA is not taking that much steps, or even India is not that taking that. Always we have seen India has the policy of passive mood, not aggressive or active policy. Whole world always waiting that when something Pakistan will do against humanity, against people, then we take the action. Why always we have to wait that they do something wrong? Why we are waiting that they repeat again the history of Bangladesh and commit genocide of Sindhi, Baloch and Pashtun people? That's why I am requesting to United Nation. I want to request especially to PM Modi ji. You have that ability. India has that Shakti. In this region, India is a largest democratic country which can be a savior of whole region. But when it will be in that position, when your leaders will come in front and bring the strategy, strong decisions. Don't wait that when Pakistan again will attack or send some proxies to India and kill everyone, then you will take the action. No. Pakistan can be easily balkanized if the separatist group, we nations which are living in slavery of Pakistan, if we will be supported it means that if India can make foreign office of the birth, it is time that India should announce foreign office of Sindh, Balochistan and Pashtuns. These Punjabis and ISI really will vanish. And it is easy, it is not the problem. Why people are afraid of them, I don't know, but we are living over there and we know that how Pakistan can be balkanized. And it is need of time, really it is need of time. If we will not think on these things this time, the accident of Afghanistan already happened, and tomorrow it is going to be Ghazwa Hind, or tomorrow next target is India. So I want to request the people who will listen later on this program, come out, help the narrative, pressurize your government, because this is not only our issue, but this is your issue, and every person who has common sense or he is civilized, who is wishing that this our region should grow in prosper way, everyone should come forward. Same time, United Nations, USA, European Union,
they have to be awakened. They must come out from their sleep and blackmailing of Pakistan. Pakistan, in first step, should be declared as a terrorist organization, terrorist state. Sanctions should be put it on from every country, even the IMF and all other funds should be stopped immediately against Pakistan. It must be isolated, and that is the only way, and the support of local freedom organizations, local freedom nations. They are asking for their right of self-determination. So these are few ways we can get rid of this unnatural state. But if 5 years, 10 years, again we waited that they will start Ghazwa Hind, then we will manage with them, it is going to be a massacre. It is going to be a disaster. So instead of waiting and get killed, it is better that we should take some steps, we take some measures. And I'm sure PM Modi has that guts. India has that capacity. India has to come out from that comfort zone and take some aggressive decisions. Thank you very much. Thank you very much. I will start with this unnatural country was created, and Balochistan is the most sufferer. Then comes Sindh and Pashtunistan, Sindhu Desh. You see, what happens is when we got freedom, as India got freedom, 1947, and British left. When British left, what they did is they gave this country to their most obedient servants, which is British Army. Then that British Army turned into Pakistani Army. And they were whatever orders they were given from the British, they were following those orders, even today. And when Jinnah pressured our Khan that you should merge with Pakistan, this also shows that we were not part of British India and we were a separate country. And that separate country was pressured to join Pakistan. And our leadership, the Baloch leadership, was very advanced. That's why we had elections in 1947 in Balochistan. Our parliament, when Jinnah pressured Khan and Khan brought this matter to Baloch parliament, when this came to Baloch parliament, the leader of the parliament, Mir Gonsbaksh Bizenjo, put this in the parliament, and the parliament decided overwhelmingly that we are not going to merge with Pakistan. So that is our determination, that we are not a part of Pakistan. Then they had no other choice but to use force, send the army to capture Balochistan. After that, the same leader, Gonsbaksh Bizenjo, was put in Kuli camp and tortured. And with that, all his friends, including my father, Sardar Ataullah Khan Mangal, Gonsbaksh Bizenjo, Gul Khan Nasir, Nawab Khair Bakhsh Mari, all the senior leaders who would have played their part and ruled Balochistan to prosperity, because
Balochistan is a mineral-rich country. And what happens is when the gas came out and all those mineral resources, they had started seeing the benefits of those mineral resources, and then they started pretty planned grabbing of resources by this Punjabi barbarian army. What I'm trying to say is our history is full of misery because of this unnatural country. My request is to the civilized world that whatever atrocities they are doing in Balochistan, they should open their eyes and they should see what is happening. Because of the Chinese, when the Chinese enter the scenario, they become partner. China has also become a criminal partner with the Pakistan army to loot and plunder Baloch wealth. When our students, our intellectuals, they started resisting. When they started resisting, and they were brutally suppressed, and we had so many wars with Pakistani army. And in those wars, thousands of Baloch lost their life. And even today, they are forcefully disappearing our students, our intellectuals, torturing them, killing them, putting the dead bodies on the roadside. And the world is silent. Anything happens in other part of the world start crying that, oh, this happened, that happened. But I have not seen all those organizations come out and support Balochistan, that what this barbarian army is doing. That's why we are struggling in US also, we are struggling to convince the authorities in USA that stop funding them. They have no right to fund these thugs and mafia army, barbarian army, to kill. And I was wondering, one day I saw that United Nations General Secretary was sitting with the Pakistan army. When I was in Geneva, I put in my protest, I said, Mr. General Secretary, you should not sit with the killer of my people. You should send the fact-finding mission to Balochistan and see what miserable condition our people are living. And go and check all those army camps, which are the cell for the torture and brutally kill and mutilate the bodies and throw them on the street. These fine young students should be in the universities, should be scientists, should be part of society. Just because Punjab wants to grab and control and capture Balochistan, so they are doing all these tactics. But they should know Baloch will never give up, has never give up. And we were in this struggle of freedom. At that time, it was called Freedom of India. And freedom of India and freedom of Balochistan was parallel, going together. Our leadership also took part in those struggles. Khan Abdul Ghaffar Khan, Wali Khan, all our Baloch leadership, Mir Gons Baksh Bizenjo, they struggled against the British. So we put our part to get rid of British. And then we became a slave of the slave. And India is silent.
and India got their part, they are happy with it. And we are suffering, and India is quiet. India took part in Bangladesh. When they captured this criminal army, they should have been tried in the international court. Why they allowed them to go scot-free? Whatever they did, the Germans, they did in Germany against the Jews. Even today, they are searching them, capturing them, taking them to the court and punishing them. Even 80 years old, 90 years old. We have the list of all those generals. They did crimes in Balochistan, crimes in Sindh, crimes in Pashtunistan, crimes in Kashmir. I'm wondering how you allow the Sindh to be under control of Pakistan, which is a artificial country. How you allow this Kashmir to be ruled by Pakistan? All these things belongs to India. When you don't claim your own land, so how you gonna open up yourself for the other nationalities? Look at Bangladesh. You supported Bangladesh, and Bangladesh is a free country. And it's a time of nation states. If you don't claim your land back, so at least help them to get freedom from this barbarian army. So that they're going to be a Sindhi army to control their own land. There's going to be a Baloch army to control Baloch land. There's going to be a Pashtun army to control Pashtun land. There is a Punjabi army already. Let them control their own land, their own resources, so that all those nations flourish, use their resources. Because of my resources, my wealth. Our enemy is our wealth, the Baloch wealth. The enemy of Sindhi people is their wealth. Sindh has gas, Sindh has so many resources, and coastal water, the coast, belongs to Balochistan and Sindh. Punjab does not have the coast. So they will do everything. They will do everything to control our land. They will not give up such a huge army. And that's why we are struggling to see that their lifeline is going from United States and UK. India must have a serious dialogue with these two countries. They created this artificial country. When you create an artificial country which is not even in your control today, they are blackmailing. Today they have become so big, they are blackmailing America, they are blackmailing UK, they are blackmailing the whole world. So do you allow this blackmailing to go on? Are you going to take steps? At least to begin with, to see that the generals going to be deterred when you talk with Bangladesh and bring all those generals to the international court and make us a party. So we have so much proof what they did in Balochistan. So we can be a party in the international court. We cannot go to the international court because we are not a approved nation in United Nations. Only the countries can go to international courts. So you take this matter, we're going to join with you and bring those generals to the books. You check all those, what you call that, bank balances of those generals. They are so greedy. They become the partner with China.
and China is giving money to them, which is not even registered, which is not even be shown. This is invisible money. And China is a criminal partner. So we have to stop. If you claim your land, which is Gilgit-Baltistan, so you're going to choke China. China cannot come down. So we will have a relief. If you don't take steps, as Saitoji says, if you don't take steps and just keep quiet and incident after incident, so which is going on, we are the sufferer. You are also suffering because of this criminal army. Look at the condition of Kashmiri people. Your own people are driven away from Kashmir, and they're living in the camps and in Delhi and all those areas, Kashmiri Pandits. So you have to be brave. At least you should show some hope to us. Help your own people so that we see that you are strong, you are capable of taking steps, and help us to kick Pakistan out of United Nations. Only a civilized country must be in United Nations. And in United Nations also, at least small steps I see in United Nations because I go to Geneva, but I don't see those steps which are going to hurt Pakistan and China. China wants to control the coast and the Gwadar to make a naval base. So if this becomes naval base, which is a choking point for the whole world, how you allow these terrorist army and the criminal Chinese to come slowly creeping and making our life miserable, and in future you have more danger for you. So my request is, claim your land, be strong, take some steps, and I request the Indian population to raise their voice. What they are doing in Balochistan, especially the Indian Muslims, when they start crying when something happens in Palestine and other areas, but they don't raise their voice. What China is doing with Muslims and what Pakistan is doing is with Muslims. So all these, your organizations, your population, and plus the government they are openly supporting Khalistan movement. They are openly supporting the terrorists to punish India. And why don't you openly support the political movement outside in international stages and within your own rank and file? We hope that my voice going to be heard, and they're going to take some steps. See, the problem is when we should know that, okay, now the India is ready. Now what they did as Saito says, that what they did in Bombay, they attack your parliament, and I don't see any action. All this documentation, all these files going here and there, that's not the way, because that country will not learn. They are using their guns on their civilians, our civilians. They are using their fighter jets, gunship helicopters to kill Baloch. And I request that to help us to bring this no-fly zone move forward so that we can raise our voice. So put a no-fly zone. The Pakistani fighter jets should not fly in Balochistan. Our young men resisting, and this resistance is not going to stop.
we're not going to give up our land. But as the time passes, more dead bodies. It's not only our dead bodies, it's dead bodies of Pakistan Army also. And China is supporting them to sustain. But once their financial system is choked up, it's going to help a lot. The rest we're going to take care. So world must listen and world must help to liberate all those nationalities so that you can live in peace. If you don't break Pakistan, Pakistan will not stop all that. It's already a failed country. They don't have any means. They don't have any economy. This country was not created for the people of Pakistan. This country was created by the British for the army. And that army is controlling that country since 1947. And how it is acceptable for you? It must not be acceptable to you. So we must all join together and get rid of this barbarian army so every can breathe free. Our Bengali brothers are breathing free today. So make all those small nationalities, let them have their own army and contain this barbarian army. That's my request to the world, to all those civilized nations. So help us. We're going to advance our move. And please join us to raise the voice. Now they started killing children, started killing women, and they're starting killing the creams, the society, the cream of the society, which is learned people. They will not stop. They only understand the language of force. So you have to show some courage and some force to change the scenario for you and for us. With that, I thank Sangam Talks, and hopefully in future you give us more chances to raise our voice. Thank you. Jai Hind, Jai Baluchistan, Jai Sindhu Desh, Jai Pakistanistan. And kick them out of Afghanistan, all those jihadi army and jihadi, all those. Thank you very much. Sir, I would like to start with a question to Zafarji. Zafarji, like Razakji gave a historical perspective to how, when Balochistan was created during the freedom movement and how it was hijacked, I would like you to give a historical perspective to the accession of Sindhu Desh to Pakistan. Because some activists say that was also धोखा हुआ हमारे साथ. सिंधु देश आप अगर महाभारता में देखें तो उस टाइम भी सिंधु देश नरेश था. ठीक है. जब राजा डाहिर, जब अरब्स ने 7/11 पे हमला किया, 7/11 में हिंद एंड सिंध, मैं हिंद और सिंध एक ही समझता हूँ, because it is not something different. Hinduism, Sindhuism, Sanatana Dharam, it is something same. So 7/11 में जब अरब्स ने अटैक किया सिंध के ऊपर, राजा डाहिर डिफेंडेड हिंद एंड सिंध. सही है. उसके बाद हम देखते हैं कि सिंध आजाद रहा है. राजा डाहिर सिंध का लास्ट हिंदू किंग था, राजा डाहिर सिंह. अरब्स ने हमला किया और सिंध को कन्क्वेयर किया. शुरू दिन से इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो यही है, कब्जा करो, डिस्ट्रॉय करो, मारो, खत्म करो. Anyone who is not radical same like us, he has no right to live on this earth.
ये आइडियोलॉजी है शुरू दिन से। मुझे तो कभी-कभी ये महसूस होता है कि मीन्स जेरूसलम वाज द लैंड ऑफ ज्यूज, उस पे भी कब्जा किया। जैसे ही इस्लाम आता है, कब्जा करते हैं, मारते हैं वहां लोगों को, तोड़ते हैं। अच्छा, काबतुल्लाह में देखें, मक्का में, वहां मूर्तियां पड़ी थी, उसमें मूर्तियां पड़ी हुई थी। मूर्तियों को तोड़ा, और वो मूर्तियां कहां से गई थी? अरबों को तो मूर्तियां नहीं बनानी आती थी ना। दैट वाज आवर कल्चर ओवर देयर। तो 19 1840 में, जब 43 में जब ब्रिटिश ने इन्वेड किया सिंध को, आफ्टर मुंबई, आफ्टर इंडिया, दे इन्वेडेड सिंध इन 1843। उस टाइम भी सिंध आजाद था। सिंध वाज ए इंडिपेंडेंट स्टेट। बाद में सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश ने बम्बई प्रेसिडेंसी में लाए। तो हम अगर देखते हैं, सिंधु देश महाभारत से लेके रामायण में सिंध का जिक्र आता है, ऋग्वेद में सिंध का जिक्र आता है। इंडस को आज भी जो पवित्र हमारे नदियां हैं इस रीजन की, इंडस वन ऑफ देम, सरस्वती माता जो, जिसको हकड़ा दरिया हम बोलते हैं, हकरो रिवर, वो राजस्थान और सिंध के बॉर्डर पे अभी वो मिट गई है। तो our traces, our history, our roots are the same. We are not something different, we are the same. तो हमारी रूट्स जो बता रही हैं हमें, हमारी जो हिस्ट्री बता रही है हमें कि सिंध was there, सिंधु देश was there since thousands of years. ब्रिटिश ने 1943 में जब सिंध को इन्वेड किया, तो आफ्टर रूलिंग 100 ईयर, जैसे रजाक बलोच साहब ने कहा कि हमें अपने अच्छे गुलामों या नौकरों, जो उनके पंजाबी, हम उनको बोलते थे लिड उठाने वाले, जो गधों का किचरा होता है ना, वो उठाने वाले होते थे। they were good servants of ब्रिटिश आर्मी। उनको तोहफे के तौर पे, यानी हम तारीखी कौमों को, तारीखी नेशंस, सिंधी, बलोच, पश्तूनों को सर्वेंट के हवाले कर दिया गया। We became slaves of the slaves. तो सिंधु देश का जो केस है वो आज का नहीं है। सिंध की हिस्ट्री 7,000 साल, 10,000 साल, 5,000 साल जो हमें रिटन हिस्ट्री मिल रही है, वो 3,000 ईयर्स की मिल रही है। तो हमारा सिंधु देश का जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो रूट्स हैं, वो शुरू दिन से हैं। लेकिन पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन, इस्लामी नेशन, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो हमारी लैंड थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारा जो कल्चर था, हमारी रूट्स थी, हम किसी को भी ये हक नहीं देंगे कि वो हमारी लैंड, हमारी आइडेंटिटी, हमारे कल्चर, हमारे रूट्स को डिस्ट्रॉय करे इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ false and unnatural country. No, they don't have right. तो सिंध का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हम एक तारीखी कौम हैं। और देखें, ये जो हमारा मौक़िफ़ है ना, हमारी जो बात है, व्हाट वी आर सेइंग, नो पाकिस्तानी चैनल, नो platform, no network has that coverage to bring us and talk to these journals.
talk to these intellectuals which are paid, which are servants of this terrorist organization, which is called Pakistani state. Let them come talk to us. We will tell them who you are. देखें, इनको मालूम है, they know that if they will connect to history, they will connect to roots, they will connect to land, they will connect to their culture, they will connect to their language, means इनको इस्लाम से डिनाई करना पड़ेगा, जिसके नाम पे ये धंधा कर रहे हैं। इस रेडिकलिज्म के नाम पे ये जो वर्ल्ड को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये जो धंधा कर रहे हैं, एक अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है जो रूल कर रही है। few feudals are there, few terrorists are there, they are blackmailing the world. लेकिन बहुत हो चुका। historical nations will survive. पाकिस्तान खुद ब्लेंडर्स कर रहे हैं। क्यों? कि जो झूठ पे बनी हुई चीजें होती हैं, जो फॉल्स होती हैं, जो अननेचुरल होती हैं, they must have to be vanish from this earth, or soon they are going to be finished. ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम कुछ नहीं कर सके, इंडिया कुछ नहीं कर सका, वर्ल्ड कुछ नहीं कर सका, लेकिन ये खुद भी फितरत माता जो है ना, इनको नहीं बख्श करेगी। जितने इन्होंने जुल्म किए हैं, जितने ये अभी तक जुल्म कर रहे हैं, these will be punished. हम तारीखी कौम हैं, वो सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, we are the owners of these lands. We are the historical nations. Even मैं तो पंजाबियों को भी बोलता हूं, तुम लोगों का दिमाग खत्म हो गया है, your common sense is gone. Why you are not connecting to your roots? Why you are not connecting to your history? इनको मालूम है अगर ये अपनी हिस्ट्री और अपनी रूट्स से कनेक्ट करेंगे तो इनकी ये फॉल्स आइडियोलॉजी मर जाएगी, जिसके नाम पे ये धंधा कर रहे हैं। ओके, आर्मी इज डूइंग देयर बिजनेस, बट द कॉमन पीपल हैज टू अंडरस्टैंड। कॉमन पीपल, intellectual people, the people who has the common sense, who has the senses to understand that what is going on in the geopolitics, in the region, in the state, they have to realize, they have to raise the voice. अगर मेरी हिस्ट्री, मेरी रूट्स नेचर से मिलती हैं, मेरी हिस्ट्री, मेरी रूट्स सनातन धर्म से मिलती है, which is not some kind of religion, it is the religion of common sense. यानी मैं कहता हूं कि भाई मैं अक्ल और शऊर का यूज करना चाहता हूं, यहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाती है इनको यहीं पे ही प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं, हमें तो यूज नहीं करना, हमें तो बस वो 72 हो रही चाहिए, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपने आप को मार देंगे, दूसरों को मार देंगे, क्योंकि हमें बस वो चाहिए। यहाँ अमेरिका हो, यूरोप हो, या दुनिया की जितनी भी फ्री सोसाइटीज हो, आप वहां पे देखें, दुनिया लोग ऑलरेडी यहाँ पे जन्नत और हूरें और सब कुछ है यहाँ पे। आप जिंदा होके सोचें तो सही। मैं ये पंजाबियों को बोल रहा हूं, जो कभी इवन जो पंजाब भी वहां पे हैं, इंडिया में भी हैं, वो भी कभी कभी वो पाकिस्तान के उसके चक्कर में आके, ISI के पैसों के चक्कर में, वो भी कभी खालिस्तान, कभी क्या बोलते रहते हैं। उनको शर्म नहीं आती है, सॉरी टू से दीज वर्ड्स, बट एक 12 साल की सिख लड़की के साथ रेप होता है, एक गुरुद्वारा जलाया जाता है, तो लंदन में बैठे, कनाडा में बैठे, इंडिया में बैठे ये सिख कभी बात नहीं करते। कश्मीर के लिए, हाँ, कश्मीर में तो इंडिया जुल्म कर रहा है,
वो झंडे लेके आके खड़े हो जाते हैं यूएनओ में। पंजाबी आर्मी, आईएसआई, इनको तो शेम है ही नहीं, ये तो टेररिस्ट हैं, इनको ब्लैकमेलिंग चाहिए। लेकिन तुम लोग तो कॉमन सेंस यूज करो, तुम्हारी एक अपनी हिस्ट्री है, इतने महान देश हिंदुस्तान में तुम रह रहे हो, मालिक हो हिंदुस्तान के, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड योर थिंग्स। मुझे तो कभी कभी बहुत शेम फील होती है कि ये इंडिया में लेफ्ट विंग के या सेक्युलर थॉट के लोग कुछ बोलते रहते हैं, ओ मुसलमान 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 कौम। इंडिया में भी अभी तक बहुत सारे इलाकों में मुसलमान कौम बोलते हैं अपने आप को। स्टूपिडिटी की कोई यानी एक लेवल होती है ना, ये लोग उससे भी चढ़ जाते हैं। मुसलमान कौम कहाँ, कौन से किताब में, कौन से हिस्ट्री में, कौन से फलसफे में लिखा हुआ है कि इस्लाम के नाम पे या किसी रिलीजन के नाम पे कौम बनती है? मैं उन सब मुसलमानों को जो इवन इंडिया में भी रहते हैं, कभी कभी वो पाकिस्तान के आईएसआई के हाथों में लग के और जहाद और ये इस्लाम का झंडा दिल्ली पे फैलाएंगे, कभी ऐसी बातें करते हैं। आई वांट टू रिक्वेस्ट देम दैट these thugs of Pakistani state organization, terrorist organization, they have nothing to do with Islam or Muslim or nothing. They are just using you guys. So इस महान देश जिसमें आप रह रहे हो, you must be happy and you must be good with your country. Don't come in the trap of Pakistani army, especially the Kashmiri young Muslims. I want to request them that don't be weapon of these ISI culprits. बाकी हमारी सिंध है, सिंध की जो हिस्ट्री है, हमारी जो पहचान है, हमारा जो कल्चर है, पाकिस्तान को उसी से ही तकलीफ है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम सिंध की कल्चर हिस्ट्री को अनाउंस करेंगे या उसको ऑन करेंगे तो उनका ये पाकिस्तानी और इस्लाम और सब चीज खत्म हो जाएगी। My question is for both the speakers. पहले एक छोटा सा पॉइंट है that the concept of India या भारतवर्ष ये हजारों वर्षों से पुराणों में और कई रेफरेंसेस में रहा है। उसमें हमारे देश अलग अलग रहे हैं, सिंधु देश, बुंदेलखंड, गांधार, कलिंग, ऐसे करके पूरा भारत, कॉन्सेप्ट ऑफ भारत बहुत हजारों वर्षों से एग्जिस्ट किया है। उसमें देश अलग अलग रहे हैं, जो भाषा, कल्चर, खान पान, रहन सहन, इसके ऊपर करीबन 56 देशों का ऐसा रेफरेंस आता है पूरे भारत में। तो जो आप एक पॉइंट बोल रहे हैं कि सिंधु देश और भारत एक है, वो एक्चुअली द आइडिया ऑफ इंडिया तो सेम ही है, उसमें देश अलग अलग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने इंडिया को भी एक नेशन स्टेट बना दिया है। प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली इंडिया नीडेड टू बी अ यूरोपियन यूनियन, ट्रूली अ यूरोपियन यूनियन। बट यहाँ पर छोड़कर मैं एक बारी इस बात को यहीं पर रखकर आगे बढ़ूंगा। अरबियों ने जब भारत पे इन्वेड किया था तो इट वाज बेसिकली जिहाद, एंड द यूनिफाइंग फैक्टर फ्रॉम अफगानिस्तान, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान to Iran, to Pakistan or various parts of Pakistan, and including in Indian Muslims, Bangladesh, everywhere it is the hate for him. It is the hate for the kafir. अब आप, मुझे नहीं पता आपकी रिलीजियस थॉट प्रोसेस क्या है, आप दोनों शायद नाम से मैं गेस कर रहा हूँ इस्लाम को बिलोंग करते हैं, मगर ये एक बिल्कुल माफ कीजिएगा हवा में बात करने वाली बात लग रही है मुझे कि सब इस्लाम छोड़कर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को में रूटेडनेस फाइंड करेंगे, बिकॉज इस्लाम में ऐसा कहीं भी नहीं होता है। वो हर जगह होमोजेनाइज करने की कोशिश करते हैं, हर जगह। हाँ, जब होमोजेनाइज हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, चाहे इराक ईरान हो या कोई और, ऐसे कई जगह चलती रहती हैं लड़ाइयाँ। तो मतलब मैं इस आइडिया से समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर बलूचिस्तान अलग होगा तो क्या वो इस्लामिक स्टेट नहीं रहेगा, क्या वो हिंदू स्टेट बनेगा?
आप मुस्लिम मेजॉरिटी होंगे, या एक अलग व्याख्या होगी, एक अलग इंटरप्रिटेशन इस्लाम की होगी? दीज आर हार्ड क्वेश्चन, मगर इसको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो हम सुपरफिशियल बातें करते रह जाएंगे कि हम कल्चरली एक हैं। जैसे अमन की आशा, सॉरी बहुत लंबा हो गया मेरा, अमन की आशा में सारे भारत में ना पंजाबी इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी पंजाब में जाते हैं और वहाँ के पाकिस्तानी पंजाब से भारत के पंजाब में आते हैं और कहते हैं वी आर वन पीपल। देखिए हम एक रोटी, एक तरह का खान पान है, वो सब है, एक भाषा बोलते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड वी हैव बिकम टू डिफरेंट सिविलाइजेशन. We are not one people anymore because they look at upon the Hindu as a kafir. So how do you want to resolve these issues? रजाक साईं, बलूचिस्तान के बारे में आप भले जवाब दें, तो मैं बाद में राहुल साहब को आई विल एक्सप्लेन इट, नो प्रॉब्लम। देखें, जो बलूचिस्तान के अंदर जो कल्चर था और आज भी जो कल्चर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि देखिए आपके साथ जो भी हुआ है, इंडिया के साथ जो भी हुआ है, इन्वेडर्स आए, उन्होंने लोगों को चेंज किया, उनका रिलीजन चेंज किया, लोग लैंड ऑक्यूपाई किए, है ना। मैं सिर्फ उसको शॉर्ट करना चाहता हूं कि 1947 में बलूचिस्तान के अंदर से मैं दावे से कहता हूं कि एक भी हिंदू माइग्रेट करके नहीं गया। ये हमारा कल्चर है। आज भी बलूचिस्तान में जो सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, समझे ना, कोई भी आदमी ये बोल नहीं सकता है कि बलोचों ने कभी उनके ऊपर हमला किया है या उनको और नजरों से देखा है। आज भी हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। मैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस का जो मेरा प्रेसिडेंट है, डॉक्टर ताराचंद साहब, वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और वो वहां पर हिंदुओं की तरफ से मिनिस्टर थे। तो मेरा सिर्फ बोलने का ये है कि ये जो चीजें खराब की गई हैं 1947 के बाद, जो जिस आर्मी को बिठाया गया है, उसका मकसद तो रशिया को कंटेन करना था और वो सारी चीजों के लिए इस आर्मी को यूज करना था। तो उसके लिए इनको बलूचिस्तान की जरूरत थी ज्यादा, तो वो उसमें हम चपेट में आ गए, समझे ना। तो मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप अगर ये आज का जो दौर है, इसमें अगर आप इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपने कहा कि भाई ये सारे राजा महाराजाओं के अपने अपने स्टेट्स थे, लेकिन जो कल्चरल बैकग्राउंड है तो उसमें क्लैश नहीं था, समझे ना। हम सब अमन से रहते थे। हमारी जो सरहदें थी, हमारे खानकलात का जो रूल था, तो हमारी सरहदें जो है हिंदुस्तान से मिलती थी। हम हिंदुस्तान के पड़ोसी थे और आज हमको जो है इन जादियों का पड़ोसी बना दिया गया, समझे ना। तो हमारा सिर्फ ये है कि भाई उसको आप बहुत पीछे ले जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में ये देखना है कि वे फॉरवर्ड जो है वो यही है कि आप जो है आज के ज़माने के हिसाब से, आज का जो वर्ल्ड सोचता है, आज का यूनाइटेड नेशन जो सोचता है, आप उसको सपोर्ट करें, समझे ना। एज लॉन्ग एज ये इलीगल कंट्री रहेगा तो ये आपके लिए भी एक कैंसर है, प्रॉब्लम है, और हमारे लिए भी है। अभी तो ये इंटरनेशनलाइज कैंसर बन गया है। तो दैट्स माय आंसर। थैंक यू। एक्चुअली राहुल जी ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसका उन्होंने ऑलरेडी जवाब दे दिया था कि डिफरेंट स्टेट्स थी और डिफरेंट किंगडम्स थी, और अभी जो है वो जो यूरोपीय यूनियन का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो दैट इज पॉसिबल, दैट सॉल्यूशन उन्होंने अपने ही सवाल में अपना जवाब दे दिया था। तो इट इज प्रैक्टिकल थिंग, वी कैन गो विथ इट। बाकी जो ये राहुल जी को एक कंफ्यूजन है कि आगे चल के यानी ये अक्सर क्वेश्चन होता है कि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री बन गया तो ये सिंधु देश और बलूचिस्तान और पश्तून ये इस्लामिक कंट्री बनेंगे या क्या आगे एक प्रोसेस होगा। तो उसका एक पार्ट का जवाब जो है ना, रजाक जी ने उनको दे दिया कि देखें अभी हमें आगे क्या करना है उस पे फोकस करना चाहिए। ज्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो
बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि इंडिया पे भी जो सबसे ज्यादा रूल किया है वो मुसलमानों ने ही किया है। तो अगर उस सेंस में आप जाएंगे तो ये बहुत एक लंबी डिबेट है, उस पे बाकायदा एक टाइम चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि देखें, ना पंजाबियों से कोई गिला है, ना सिंधी या बलोच या पश्तून से। हम रेसिज्म पे जो आप बोल रहे हैं ना कि कल्चरल आइडेंटिटी, हम ये बोल रहे हैं कि अपनी रूट्स को फॉलो करें और अपना देश बनाएं। अपने रूट्स को फॉलो करें अपना, तो ये कंट्राडिक्शन खत्म हो जाएगी। ये जो पाकिस्तान आईएसआई स्टेट एक टेररिज्म बना हुआ है, हमारा असल पहला इशू जो है वो ये है कि कैसे भी करके इसको खत्म किया जाए। वो जो आइडियोलॉजी आ रही है, उस आइडियोलॉजी को एक मर्तबा हम डिनाउंस करके इसका वजूद खत्म करें, इसको बल्कनाइज करें। उसके बाद देखें, जैसे आप बोल रहे हैं कि हवा में बात करने वाली बात हो गई कि हमारा कल्चर जो है सेम है, हमारी आइडेंटिटी कल्चर, ये हवा में बात नहीं है। ये दीज थिंग्स आर प्रैक्टिकल। दिस इज आवर आइडेंटिटी, माय डीएनए, माय जीन्स, माय रूट्स, माय आइडेंटिटी हवा में बात नहीं है। वी आर एग्जिस्टिंग सोल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारा राइट बनता है, बिल्कुल, वी हैव टू गो थ्रू इट। India intervened in Bangladesh, but still we see Hindus being persecuted there. How will Balochistan and Sindh be different? Rahul ji, you can ask your follow-up question alongside. हाँ जी, वो सेम है। अब चाहे एग्जैक्टली द सेम पॉइंट जो आपने अभी बोला, चाहे अगर वेस्ट बंगाल के हिंदू हों और अगर बांग्लादेशी हिंदू हों, भाषा एक बोलेंगे, कल्चरल रूट्स एक हैं, मगर वो अटैक ऑन हिंदूज बंद नहीं होती, क्योंकि वो इस्लाम का प्रभुत्व सबसे, मतलब आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले इस्लाम की होती है, उसके बाद कुछ और आता है। तो आप इसको कैसे आप इतनी लार्ज पॉपुलेशंस को टर्न कर देंगे? सपोज कल को कंट्रीज अलग हो जाती हैं, सिंधु देश हो जाता है, बलोच, एंड बिल्कुल इससे मैं राजी हूँ, ये होना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज टू बी बाल्कनाइज्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। I mean, we have to work for it, and unfortunate that the Indian government is not doing enough. So, मगर आप आगे के लिए वहाँ के population का क्या? How will you reconcile with India, which in the Islamic theology is considered a kafir and the worst of creatures as per the scripture? इड जो होती है ना, आइडेंटिटी, वो इड आपकी रूट और आपकी जो असल पहचान होती है ना। आपका नाम राहुल है, मीन्स आपके माँ बाप ने आपका ये नाम रखा था ना, तो आपकी ओरिजिन्स क्या है, वो रूट्स आपकी क्या है, वो वही सनातना धर्म से हैं। सनातना धर्म से सिंधुइज्म और हिंदुइज्म, ये कंटिन्यूटी है हमारी। तो ये हमारा जो रीजन है ना, यानी, तो हम कोर से, अंदर से जो है ना, वी आर सनातनी। क्योंकि अभी हमारे ऊपर एक इस्लामिक आइडियोलॉजी, थियोलॉजी रूल है। हम हक की बात ही नहीं कर सकते अभी ना, तो क्योंकि एक रेडिकल रूल के अंडर है। तो जिस दिन हमें थोड़ा स्पेस मिल गया ना, यानी आप ऐसा समझें कि हजारों साल की ये मेस है, हजारों साल की अरब इन्वेडर्स ये वो आए हमारे ऊपर, हमें हमारा सत्यानाश कर दिया है, हमें वाइप आउट कर दिया है। उन रूट्स को, उन आइडियोलॉजीज को, उस कल्चर को, उस हिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए आप ये नहीं समझते कि एक हफ्ते में, 50 दिन में या 5 वर्षों में हम जो है इस पूरे गंद और किचरे को जो हमारे पास आया है उसको सही कर सकते हैं। सो धीरज रखिए, की पेशेंस, इट इज द प्रोसेस। और फर्स्ट प्रोसेस ये है कि पहले ये जो रेडिकलिज्म है हम इससे निपट लें। पहले जो बल्कनाइजेशन है, जो ये रूल ऑफ इस्लामिस्ट
हमारे ऊपर डाला गया है उससे जान छुड़ा लें, तो जब आप थोड़ा बहुत यानी आपके पेट में रोटी होगी ना, तो आप कुछ बात भी कर सकेंगे। लेकिन अभी आप यानी अगर आप ये मैं आपको ये सिचुएशन बताऊँ सिंध में, बलूचिस्तान में, पश्तूनों में, अगर कोई आर्मी को या ये तालिबान्स को अगर कोई एक लफ्ज़ बोलता है ना, तो वो या तो उठाया जाता है या मार दिया जाता है या उसको खत्म किया जाता है। तो how you can expect in such society that people go to their roots? It is process. तो हमें कुछ आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आप हज़ारों साल का जो गंद कचरा है ना, वो एक दिन में साफ नहीं कर सकते। You got my point. So we have to go through process and we have to all together unite in this front. हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा और हम जो एक मर्तबा इसकी पाकिस्तान की बल्कनाइजेशन हो गई 75% ये टेररिज्म खत्म हो गया रूल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया तो वी कैन ग्रो फिर हमारी मर्जी होगी कि हम क्या बनाते हैं कैसे जाते हैं किस तरफ जाते हैं ऑफ कोर्स आपकी या मेरी जो आइडेंटिटी है हम इंसान हो जानवर हो कोई भी बर्ड हो कोई भी हो वो हमेशा अपने ओरिजिन के साथ कनेक्ट होता है वो फितरत उसकी हमेशा रहती है क्योंकि वो जेनेटिकल होती है वो आपके अंदर होती है तो इट विल टेक टाइम थैंक यू सभिनि खां पहिरियों जफर जी आयोलाल चओ झूलेलाल 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 संगम संगम टाक्स खे मां धन्यवाद ॾियणु चाहींदुमि छोकी तव्हांखे इनवाइट कयूं ॾाढो सुठो लॻो ऐं मुंहिंजा जफर जी 3 सवाल आहिनि पहिरियों हुते जो सिंधियुनि हाणे रहनि था हुननि जो छा हाल आहे तव्हां चयो 1.3% आहिनि त मुंहिंजे दादा बि हुते छॾे आया पंहिंजी हवेली ऐं हिते अची करे रेफ्यूजी वांगुरु रहियूं महिनत कयूं असांखे मुंहिंजे पप्पा खे वॾो कयूं असांखे हिन मुक़ाम ते पहुचायूं त हुते जो सिंधी रहनि पिया आहिनि उन्हनि जो छा हाल आहे पहिरियों क्वेश्चन हे आहे ॿियो जफर जी हे आहे की असां हुते जो सिंधी रहनि पिया आहिनि उन्हनि खे असां नॉर्मल माण्हू कीअं मदद करे सघूं था हितो भारत मां ऐं टियों प्रश्न हे आहे मुंहिंजो सवाल की तव्हां चयो था की 1.3% सिंधी बचियल आहिनि ऐं पंजाबी हुते वधीक आहिनि त तव्हां हुननि सां मिली करे छो न सिंधु देश ऐं पश्तून देश ऐं बलूचिस्तान हे ठावनि था ऐं उन्हनि खे बि सम्झाइनि की खालिस्तान हिते करनि था भारत में हुते छो न था करनि खालिस्तान हुते छो न था पंहिंजो स्थान ठावेनि तव्हां सभिनि सां मिली करे So my first question was the Sindhis who are staying there, what is their status as of now? What is their living condition? As I hear from my grandparent that they left their Haveli and they came here and they lived in, destitution and then worked hard to reach what we are today. What is the current status? Second question was, how can we normal Sindhis here, the bottom of the pyramid, not in the very high place, how can we help them in their cause? वहाँ पे क्या कंडीशन है सिंधी हिंदुओं की तो वो बहुत खराब हालत है अभी खराब हालत इस सेंस में है कि हर रोज मंदिर तोड़े जाते हैं वहाँ पे हर रोज मूर्तियां तोड़ी जाती हैं हर रोज हर दूसरे दिन किसी नौजवान सिंधी हिंदू लड़की को हमारी बेटी को बहन को उठाया जाता है वहाँ पे सेक्स स्लेवरी और ये रेडिकल्स के हवाले किया जाता है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यूएनओ की रिपोर्ट है उस यूएनओ की रिपोर्ट में भी यही बोला गया है कि वेस्ट जो सिंध में स्पेशली सिंध में पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म किया जा रहा है हालांकि सिंधी हिंदुओं को मैं मिनॉरिटी नहीं समझता हूँ दे आर द रियल ओनर्स ऑफ सिंध अच्छा दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि आपके दादा जो बोल रहे थे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज वहां छोड़ के आए थे
तो it was a pre-planned, military engineered, like systemically उन्होंने एक प्लान किया था कि जितने भी हिंदूज हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा यानी बिजनेस ओनर्स थे, उनके पास लैंड थी ज्यादा और उनके पास वसाइल थे, वेल्थ थी, तो उनको वहां से कैसे भी करके उनको निकालना था, क्योंकि उनको निकालने के बाद ही वो जो है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बना था, तो उनका ये मानना था, इंजीनियर्ड जो एक प्लान था आर्मी का, कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को यहाँ पे सेटल किया जाए। इस वजह से हिंदुओं को बोला गया, सिंधी, स्पेशली सिंधी हिंदुओं को, कि भाई आपका मुल्क इंडिया है और आप वहां चले जाएं। ये पाक आस्थान मीन्स पाक लोगों की जगह है, पाक मीन्स प्योर, आस्थान मीन्स जगह। तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है, यहाँ पे काफरों की कोई जगह नहीं है, काफरों का मुल्क इंडिया है, आप वहां पे चले जाओ। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बोली कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, देखें, इसराइल के जो यहूदी थे ना, वो डिस्पर्स्ड हो गए थे जब नाजियों ने जुल्म किया था और इसराइल यहूदियों को पूरी दुनिया में परसिक्यूट किया गया था, ज्यूज को। लेकिन वो कहीं पे भी रहे तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एंड दे गॉट देयर लैंड बैक। तो हम भी हमारे पास एक सिंधी में कहावत है कि जब आप एक कदम बढ़ते हैं तो धरती के लिए, जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो धरती आपके लिए 2 कदम बढ़ाती है। तो जिथे चाह हूंदो आहे उते रस्तो बि मिली वेंदो आहे, सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं, मीन्स वेयर देयर इज विल देयर इज वे। सो अगर आपको जुड़ना है तो अभी वी आर ग्लोबली कनेक्टेड, अगर वाकई कुछ करना होता है ना तो वहां पे रास्ते मिल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और स्पेशली अभी तो हम सोशल मीडिया वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो दैट इज नॉट समथिंग बिग। अच्छा, आपने दूसरी बात, आखिरी क्वेश्चन जो आपने बोला कि फ्रीडम में व्हाई दे आर नॉट टेकिंग पार्ट, देखें, जब आप सिंधी हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि वो फ्रीडम में क्यों पार्ट नहीं लेते, वो बेचारे अपना भजन गाने के लिए, झूले लाल कहने के लिए तरस गए हैं वहां पे। अगर वो सिर्फ झूलेलाल बोलते हैं तो दूसरे दिन उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। तो ऐसी वर्स्ट सोसाइटी में, ऐसे डिफिकल्ट हालात में, ऐसे कंजेस्टेड सोसाइटी में, हाउ यू कैन गो फॉर फ्रीडम मूवमेंट? इट इज डिफिकल्ट। हाँ, इंडिया में बोलते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की तरह रेडिकल नहीं है भाई। वहां पे सेक्युलर बाबूजीज और लेफ्ट विंग और सभी जो जिसको जो मर्जी आता है, वहां पे तो मुसलमान जो है इस्लामिस्ट वहां पे तो पाकिस्तान का झंडा भी उठा के फेरते रहते हैं, कोई उनको नहीं बोलता है। इंडिया इज नॉट रेडिकल स्टेट, इट इज सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, तो वहां पे ये चल जाता है। पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं, कोई हिंदू आके बोलेगा कि हमें आजादी दो, वो बेचारा अपने घर के लोगों के साथ दूसरे दिन सुबह को आपको सबकी लाशें मिलेंगी। तो इट इज नॉट इजी ओवर देयर। ये मूवमेंट जो हम फ्रीडम की मूवमेंट है, अभी हमारे पास एक ही तरीका है कि वी शुड गो ए रिवॉल्यूशनरी अंडरग्राउंड politics and underground systemic way to get rid of Pakistan. ओपनली वहां पे अभी सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं है, आप वहां पे पॉलिटिकली या कोई ऐसी आवाज नहीं उठा सकते। थैंक यू। There is a question from Vinita. She says, I wanted to ask Zafarji a question. I have a question related to the partition. During the partition, a large number of Hindu Sindhis shifted to India. My ancestors were one of them. I've heard that not all Hindu Sindhis who wanted to move to India were allowed to do that. They were stopped. Is that true?
And if that's the case, why would they stop? पहले ये आंसर कीजिए, फिर अपनी पर्सनल जर्नी शेयर कीजिए। देखें, पाकिस्तान का बनना ही इसी आइडियोलॉजी पे था ना कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो जब मैंने वही पहले भी बताया, पाक-आसान मीन्स सिर्फ मुसलमानों, पाक प्योर, वो मुसलमान अपने आप को बस प्योर समझते हैं, बाकी सभी जो है ना गंद किचरा है, वो सभी बेकार हैं। जो प्योर हैं बस वो पाकिस्तानी या मुसलमान ही हैं, जिनकी रेडिकल आइडियोलॉजी है, सॉरी, यानी जो रेडिकल्स हैं। तो जब पार्टीशन का टाइम हुआ था तो लॉट ऑफ हिंदूज वाज फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम देयर, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे, जैसे रज़ाक जी ने बोला कि बलूचिस्तान में उनको बाकायदा सपोर्ट किया गया हिंदुओं को और प्रोटेक्ट किया गया कि वो वहाँ से ना जाएँ, और उनको स्टॉप किया गया था। ऐसे सिंध में भी बहुत सारे ऐसे सिंधी थे जिन्होंने ट्राई किया, क्योंकि देखें, सिंधी हिंदूज़ वाज़ द रियल ओनर्स ऑफ दिस लैंड। तो हमें मालूम था कि आगे पाकिस्तान और पंजाबीज़ जो क्योंकि हिंदू ज़्यादा सिंध में ही थे ना उस टाइम, तो उनका ये प्लान था कि सिस्टमैटिकली के यानी कैसे भी करके हिंदुओं को यहाँ से निकालें और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी ज़मीनें, उनकी वेल्थ पे हम कब्ज़ा करें, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पे होंगे तो वो आइडेंटिटी एंड नेशनलिज़्म का वो फैक्टर हमेशा रहेगा। तो उनकी ये प्रायोरिटी थी और ये उस टाइम हमारे जो लीडर्स थे, सिंधी लीडर्स थे, उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो जल्दी में हमें यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रहे हैं सिंध की। तो इसी वजह से बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए थे कि सिंधी यहाँ से ना जाएँ। लेकिन क्योंकि आर्मी और आईएसआई और उस टाइम जो इस्लामिक ग्रुप थे, वो पावर में थे, उन्होंने लोगों को वहाँ से निकाला था। थैंक यू। अच्छा, जो अभी दूसरा पार्ट है कि हाउ आई वाज़ परसिक्यूटेड, मैं सिविल इंजीनियर हूँ और बिज़नेसमैन था दुबई में। मेरे तकरीबन 4 बिज़नेस थे दुबई में, 200 एम्प्लॉयी थे दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो मैं 2004 से दुबई में रहता था और मेरा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो एक इंडियन कंपनी थी। तो मेरी कोशिश रहती थी कि सिंध की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, आज़ादी की तहरीकें हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँ, क्योंकि मैं खुद जीए सिंध में जिसाफ में स्टूडेंट लाइफ से जीए सिंध स्टूडेंट फेडरेशन में रहा था, बाद में फिर कौमी तहरीक यानी नेशनल मूवमेंट में था मैं। तो मैं अक्सर जितने भी सिंधी मूवमेंट्स थी उनकी मैं मोरली, फाइनेंशियली जिस तरीके से भी जो भी यानी आप कर सकते हैं, तो मैं करता था। 2013 में जब किलिंग्स स्टार्ट हुई सिंध में नेशनलिस्ट, जो हमारे तकरीबन 1-2 साल में 3 साल में 55 नेशनलिस्ट को हमारे नेशनलिस्ट को मारा गया वहाँ पे। आईएसआई ने उनको उठा के उनकी मशक शुदा लाशें हमें दी और उन पे टॉर्चर किया गया। तो उन ऑर्गेनाइज़ेशंस को और उन फैमिलीज़ को मैंने ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 2015 में मैं जब अपने कज़न की मैरिज अटेंड करने सिंध गया, मेरा नवाबशाह से ताल्लुक़ है, तो दैट इज़ इन सेंटर ऑफ सिंध। तो जब मैं वहाँ गया तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड आईएसआई वाले मुझे अबडक्ट करने के लिए मेरे घर पे रेड किया, वहाँ पे मेरे गाँव में जहाँ पे मैं था। तो विदिन 4 आवर्स वो जैसे ही वहाँ पे मेरे घर पे आए थे, आई वाज़ जस्ट 1 माइल अवे फ्रॉम माय हाउस। तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे गाँव पे रेड हुआ है, तो मैं विदिन 4 आवर्स फ्रॉम नवाबशाह टू कराची आई केम टू एयरपोर्ट, क्योंकि मेरा वीज़ा दुबई का था। तो जब तक इन्होंने मेरा एयरपोर्ट पे नाम दिया, मैं दुबई से कराची वहाँ से सिंध से दुबई आ गया। तो 2015 से 2017 तक मैं दुबई में रहा, लेकिन ये मिलिट्री और आईएसआई ने वहाँ पे भी मुझे परस्यू किया, मुझे वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन दे नॉट सक्सीडेड और मेरा पासपोर्ट जो था उस टाइम पाकिस्तानी था।
to get rid of that Pakistani passport, I applied for asylum in USA. तो ऐसे में यहाँ पे आ गया। लेकिन उन्होंने अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। they are not stopping, they are still following me here. तो अगर मैं उस टाइम उठा लिया जाता या if I had come in their hands, you was not going to talk to me. Maybe I don't know. After 1 year, they had thrown my body. So I was lucky that I escaped. And और ऐसे नहीं है कि यानी कोई मैं खौफ की वजह से वहां से चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे जैसे लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमारे जैसे लोग दुनिया तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारी आवाज कौन पहुंचाएगा। इसी वजह से मैंने फॉर लॉन्ग रन ये डिसीजंस लिया था। बाकी वो मैं जो है ना, असल मेरे रगों में राजस्थानी खून है, तो मुझे वो मौत से और लड़ाई से और इन चीजों से डर नहीं लगता है। आई एम प्राउड सिंधी and I am proud fighter of Rajput Vansh. Now, what happened with Bangladesh, where we helped them be independent, and then we are ourselves are suffering because of that. So that thing may not, India may not open to repeat the same thing again. So while this activism is going on, would the activists, are they open to joining in the Indian state, or that is not an option? ये जो कल्प्रेट है, ये बंगाली लोग नहीं हैं। इन बंगाली लोगों को इंसाइट करने के लिए आईएसआई जितना पैसा बांग्लादेश में खर्च करती है, अपने वुंड्स जो उनको जख्म लगे हैं 1971 में, उनको चाटने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, और वो जो बूस्टिंग करते हैं वहां पर पाकिस्तान में बैठ के कि हम इंडिया को सबक देंगे, वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बांग्लादेश एक जो है वो एक ऐसा सोसाइटी हो जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ये सब मिल के रहें और बांग्लादेश को आगे ले जाएं। जब बांग्लादेश की तरक्की शुरू हुई इतने शॉर्ट पीरियड में, तो पाकिस्तानी को कहता है कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि देखें बांग्लादेश जो है आज़ादी के बाद कहाँ पहुंच गया और आप कहाँ पर हैं। जब तक आप आईएसआई को और इस कैंसर को यहाँ से ख़त्म नहीं करेंगे, ना आप सुकून से जिएंगे ना हम सुकून से जिएंगे। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान वॉज इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1947, समझे ना। ज्वाइनिंग करने की जहाँ तक बात है, तो आप ज्वाइन करें या नहीं करें, सवाल उसका ये होता है कि आप अपने नेबर के साथ रहेंगे कैसे। हम ये चाहते हैं कि ब्रिटिश जब यहाँ से छोड़ के गया, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है, ब्रिटिश इंडिया बोलता है, आप, आई डोंट इवन एग्री विद दैट टर्म दे यूज। इंडिया इटसेल्फ सो ग्रेट, इट डजंट हैव टू बी ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश ने तो आके ऑक्युपाई किया है, लूटा है इंडिया को। तो ये जो सिचुएशन है, इसके अंदर आप अपने इलाके तो क्लेम करें, आप अपना कश्मीर तो लें, गिलगित बल्तिस्तान तो लें, आप अपना सिंध तो लें, तब आप जो है सिंधियों को पूछ सकते हैं कि भी आप जो है हमको ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले तो उसको तो भगाएं जो सिंधियों के साथ जुल्म कर रहा है, बलूचों के साथ जुल्म कर रहा है, पश्तूनों के साथ जुल्म कर रहा है। उस मूवमेंट को आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आईएसआई बांग्लादेश में भी फंडिंग कर रही है और ये आईएसआई इंडिया में भी फंडिंग कर रही है। ये आपका भी जीना आराम कर रही है और हमारा भी जीना आराम कर रही है। और कश्मीरियों का भी जीना आराम किया उन्होंने। कश्मीर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने हमला किया 1 साल के अंदर, इसी तरह 1 साल के अंदर हमारे ऊपर भी हमला किया गया, हमारे धरती को भी जो है मिला लिया उन्होंने। अब हम एक फेल्ड स्टेट जो है, जो कोलैप्स होने जा रहा है, उसको धक्का देने की जरूरत है, समझे ना। वो बाद में क्या होता है वो तो देखो, हमारा जो 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 ट्रेडिशंस हैं बलूचों के, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि 1947 में हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी, सिंध में, पंजाब में, और हर इलाके में फसाद कराए जा रहे थे, बाकायदा इंजीनियर्ड फसाद थे ये सारे। लेकिन जो हिंदू बलूचिस्तान में रह रहा था, जो क्रिश्चियन बलूचिस्तान में रह रहा था, जो पारसी बलूचिस्तान में रह रहा था,
उन्होंने कभी भी अपने आप को गैर महफूज, अपने आप को अनसेफ नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि हम यहां से निकलेंगे, हमारे लिए ज्यादा खतरा है, हम बलूचिस्तान में ज्यादा सेफ हैं, समझे ना। तो इसलिए जो है, आप जब तक आईएसआई को लगाम नहीं देंगे, इतना बड़ा मुल्क इंडिया होके आप अपना जिम्मेदारी तो निभाएं। ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप अपनी भी जान छोड़ाएं, हमारी भी जान छोड़ाएं। ये आपका जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो माफिया आर्मी है, जो ब्रिटिश ने खड़ा किया है, इसको पहले तो आपको ब्रिटिश से इसकी रगें काटनी पड़ेंगी, आपको अमेरिका से इसकी रगें काटनी पड़ेंगी, तो तब जाके ये कमजोर होगा। नहीं तो ये, इनके पास कोई इकोनॉमी नहीं है, इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो इनके जिहादी इंस्टीट्यूशन जो फौज ने बनाए हुए हैं, मदरसे, हम तो चाहते हैं कि भाई ये मदरसों को खत्म करो, लोगों को मॉडर्न एजुकेशन दो। मॉडर्न एजुकेशन आएगा तो आप वर्ल्ड के साथ जुड़ेंगे। जब तक वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं आएगा तो आप यही ऐसे ही लोग पैदा करते रहेंगे जो सोसाइटी के लिए अनप्रोडक्टिव है, और इनको यही आर्मी यूज करती है मॉब के शक्ल में। आज अभी जो पाकिस्तान में हुआ, ये वही मदरसे के लोग हैं। अफगानिस्तान पे जो हमला किया गया, वहां के गवर्नमेंट को हटाया गया, ये पाकिस्तान के बनाए हुए मदरसे के लोग हैं। तो आप कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? और इसको जब तक बर्दाश्त करेंगे, हमारी भी जिंदगी अजाब है, आपकी भी जिंदगी अजाब है। हमारे हाथ में इतना बड़ा पावर होता और हमारे हाथ में इतना कुछ जो होता, तो हम तो कभी का इसका जो है वो उसका हिसाब किताब क्लियर कर देते। आप कुछ तो स्टेप उठाएं, आप कुछ तो अपना जो है कमर जो है रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें। हम आपके साथ में हैं। आपको कुछ किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद उनके लिए काफी हैं। हमें इंटरनेशनल स्टेज पे तो सपोर्ट करें, समझे ना। हमारे लोग जो है पहाड़ों में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में लड़ रहे हैं, उनके पास तो ब्लैंकेट्स भी नहीं है, समझे। तो देयर आर सो मेनी वेज। आप इसका लाइफलाइन काटें। बांग्लादेश जो है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, बांग्लादेश को तो छोड़े, इंडिया के अंदर जो आईएसआई फंडिंग करती है लोगों को, हजारों की तादाद में आपके अंदर लोग बैठे हुए इंडिया में, उनको ये आईएसआई फंड करती है। आप क्यों बोल्ड स्टेप नहीं उठाते हैं? आप अभी भी उस पुराने चक्करों में रह रहे हैं कि इसको दुख होगा, उसको दुख होगा, पॉलिटिकली हमको यहाँ पर वोट नहीं मिलेंगे, वहां पर वोट। उससे आपको निकलना होगा, आपको बोल्ड स्टेप लेने होंगे।